तो आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। कुछ लोग कल मना रहे हैं और सभी लोग जो जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। अ, आज हमारे अनुरोध पर, हमारे रिक्वेस्ट पर श्रीनिवास राव जी हमारे सेकेंड सेशन अक्यूप्रेशर पर लेंगे। पहला सेशन में कुछ प्रश्न उत्तर रह गए थे कुछ समय के कारण। द टाइम was not enough in the later, but today he has agreed that maybe there is more time for question answer. So welcome sir. Srinivas sir has worked many years in ISRO and in IT company at higher ranks, and then he thought that he was also interested in acupressure, and he does many other modalities because ये लास्ट टाइम यू मे हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि रेफ्लेक्सोलॉजी पाम्स में कैसे करने हैं, कैसे जॉइंट्स हैं, थोड़ा बहुत हमें काफी उसकी विशेष नॉलेज दी गई थी। तो आज श्रीनिवास राव सर वही से थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया। और आज का सत्र हो सकता है कि और एक्सटेंड हो क्योंकि प्रश्न उत्तर वो लेंगे आज। तो आप सभी का स्वागत है, जुड़ सकते हैं। और I hand over and I welcome and thank you, Srinivas sir, for this session that you have agreed. So over to you, sir. Dhanyawad. Thank you, Anuradha ji. This is a great opportunity I'm getting on a Raksha Bandhan day. I hope this is my gift to all Bahan and brothers and all everybody for a better health, and health is in their own hands. Am I audible? Yeah, okay. So thank you. And also, as you mentioned, today I'm going to take a little backward review of what we have discussed there. And I prepared some 2-3 audios, videos actually, with how to do the pressure, that is the reflex pressure. A new beginning for old people. It is those who have attended last session. It will be review. Am I audible, clear? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Okay, fine. Yeah. So for new people, it is a new beginning, and they don't miss anything. And for the people those who have already joined, it will be last week. It will be a revision for those people. So it is definitely is going to help a lot, I hope. And let me do whatever the justice I can do it today. Company or the clinic, whatever I have been doing it. So mainly my activities, whatever I am doing, all the alternative therapies, they focus towards the better health, happiness, success, and prosperity and energy, healing and energizing the each individual. So that's what I thought. Okay, so this we energize the rising lifeline, like in the lifeline of our palm, how it looks like. So it is the one. And as she mentioned, I worked in the ISRO Satellite Center for ISRO for about 13 years, and worked on 13 satellites, 12 to 13 satellites. I've seen success as well as a failure. And to one of my softwares was selected to be run immediately after launch at Sriharikota. So then we come to the Bangalore, and then used to run the software and find out the RB determination of the sat. The Aditya. So I think all people will be excited to see that Aditya launch also on second. So the congratulations to all Indians for the Chandrayaan success. Then I worked in Hewlett Packard in various management roles, and for 16 years, and then as the last India operations manager, I was for about 5 years, working on various modalities of the organization.
where we could see the we implemented in 2012 whatever the backup plans for the organization, which was really useful during Corona days, where people work from home, whatever the infrastructure that is required. So received most valuable player award in 2006 in Florida in English. So ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में आदत हो गया है मुझे बात करने के लिए. So this is going to be English and Hindi mixed session. Okay, so this slight review, whatever the first I'm going to make it as a disclaimer or a caution. Introduction to acupressure, intro to zone therapy, foot reflexology, auricular therapy. This is called the ear acupressure. Then SWASIO exercise and few important healing points I wanted to cover today so that everybody gets benefited. Uh, and a daily routine for a better health, what is possible. So hopefully with proper pictures, I may be able to show it everything here. Okay, so mainly we are discussing about this. Most of the information what pulled here is available openly on the internet, and in general, info taken from the due respect to the originals, so original owner, writer, publisher, creator. So I'm not claiming anything here of my own, uh, except some of the experiences which I have. Okay, so the caution, the acupressure can be used along with the traditional medicine, यानी एलोपैथी होम्योपैथी के साथ भी यूज कर सकते हैं acupressure. There are no side effects. It helps increase body healing capacity, and it increases our healing power with more of better improvement in the overall health. No known major side effects observed so far for last 25 years. And I learned in 1992, 93 time frame. So since then, here so far, I never faced any problems with the acupressure, rather no side effects. So people can happily use it either for reflexology or acupressure or ear auricular therapy. It's only for the in general education and awareness purpose I am showing it. So when you want to have a real treatment, consult the expert nearby you, or maybe we can how I can remotely I can help, will work out on that one. And pregnant ladies need to take some precautions, and treatment only under the expert supervision. Pregnant ladies, I suggest not to do this on their own, or rather don't start by looking at the video or anything. So give a gap of at least 1.5 to 2 hours after heavy meals or after lunch. So normally it is preferred in the morning 6 to 8, evening 6 to 8. सुबह में 6 से लेकर 8 बजे तक, and शाम में 6 से 8 बजे तक बॉडी में negative energy, positive energy, the yin and yang will be equal. So at that time when we are doing it, all the organs get equalized, and then the homogeneity will be there in the energy in the body. So in emergency, please consult your family physician or medical practitioner or hospital. So this is a must for anybody. Don't. So most of the alternative therapists I have seen, they want to do everything by themselves. So there are limitations for acupressure also. We'll discuss at the end of the session what are the limitations, and then we suggest people to take care of their health in a better way. As a this we can use it as a first aid also, and we can use for the regular curative also. We can use for the prevention also. While we can use acupressure for all people, it may not work 100%. Maybe 90% only results may come, and then for some people, the results from one person to the other person may vary, because somebody got cured within 1 week, 10 days. Others need not have, because बॉडी का तत्व जो है जो अलग अलग होता है पूरा लोगों का.
So the even problem is same, like high BP or diabetes or thyroid or kidney problems or any problems. If you take it, problem name may be same, but people will suffer in a different aspects of life, different aspects. So uh, एक पर्सन को थोड़ा जल्दी कम हो सकता है, दूसरा पर्सन को थोड़ा धीरे भी हो सकता है, लेकिन कम तो हो सकता है, डेफिनेटली दैट इज. So zone therapy we'll discuss. So like here you can see here the body is represented with the foot or hands both. Here the 5 to 6, 1 2 3 4 5, यानी thumb जो है, the thumb से 5 एक एक फिंगर एक एक जोन होता है. So we can get it. So this looks like this. I'll just explain this one. Can you pin me? Uh, so that the You are explanation pinned, will sir. be For others, you are pinned. others. Okay, fine. Yeah. Okay, so what we get here is when we say zone therapy, the fingers, 5 fingers, panch ungliya. So this is 5 zones. It will come up to the top like this from here. 5 zones. So 10 zones from the 10 fingers, and also from the toes. Uh, foot का 5 उंगलियां जो है, एक एक 5 5 10 fingers it will come. So that's what it is showing here. The So when we say the zone, from the top to from the bottom, the root of the nail, yani this is the portion here. The root is base of the nail here. So from here it will go up to the top of the head. So the 20 zones we have. Concept is in each zone, if any problem is there or any blockages are there in the energy blockages, there will be problems in the body, overall body. So we try to balance by pressing the root of the zone for each of the zone. Each finger, each toe, as well as each finger, we press it. Again, the big toe, whatever is seen, it itself is having 5 zones here. So any problem can be solved by just addressing the big toe zone, 5 zones here. तो सर ये बता रहे हैं कि हमारे शरीर में ये 20 जोन में, यानी कि पूरे उंगली से लेकर और सर तक, और पैरों की उंगलियों से लेकर और सर तक, ऐसे 20 भागों में जोन कहलाते हैं। और एक्यूप्रेशर में ये बताया जाता है कि किसी भी भाग में अगर कोई, या 20 में से, जैसे सर बता रहे थे कि उंगलियों से, तो वहां पर कोई भी अगर परेशानी हो, कोई हो, तो वो पता चल जाती है और वहां पर दबाने से उसमें फर्क पड़ता है। Blockages will be removed. जो उसमें कोई भी ब्लॉक है, यानी कि कोई चीज अटक गई है, वो एक जैसे नाली होती है, पानी की नली होती है, उसमें से जब हम दबाते हैं उंगलियों को या पैरों की उंगलियों को, तो उस जोन में जो अटक गया है वो खुल जाता है, वो वहां पर से निकल जाता है। यहाँ थोड़ा फर्क है इसमें जोन थेरेपी में. पानी का पाइप का एग्जांपल में गैस एयर बबल आता है. एयर बबल आने से भी थोड़ा लीक, पानी फ्लो ज्यादा नहीं होता है. सो ये एयर बबल का जैसा होता है. एनर्जी जो है वो इट एयर एयर एनर्जी इज बेसिकली एयर पासिंग थ्रू द बॉडी. Okay, so it is like the air bubbles, it will be there when we are pressing, air bubbles will go out. So thereby the full circulation of energy in the body will be good. एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग, अभी ये रिफ्लेक्सोलॉजी भी बताने के बाद मैंने एक वीडियो दिखाता हूँ कैसा करना है. वो उसमें से मालूम होता है व्हाट वी हैव टू डू. ऐसा जोन का बिगिनिंग में एक नेल इससे लेकर जो है, ऐसा ऐसा लिए तो ये है द जोन का बेस. सो वी हैव टू होल्ड लाइक दिस एंड अप्लाई द प्रेशर 7 टाइम्स, 7 बार आप प्रिवेंशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, 14 बार क्यूर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, लाइक दिस.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like this, we have to apply the pressure. So this pressure is again the 7 times when we are pressing. It is pleasurable pressure, we call it. Pleasurable, yani when we are saying pain is pleasurable pain, we call it. यानी आह्लादकर, or it is good when we are having a headache also. When we are pressing like this, we feel somewhat relieved of that. It is almost like this. So everybody knows and everybody does the acupressure. किसी को मालूम नहीं हो तो भी acupressure वो लोग acupressure करते रहते हैं. तो ऐसा ही जो जब हम देखते हैं, we are getting the zone beginning, we will go and apply the pressure. So the in the this one, the air flows, energy flow blockages, like the air bubbles or any blockages are there, that will be removed. And it is not really not blood veins. When we are talking, it's not blood nervous system, it is not blood veins. It is the only energy meridians or energy channels in the body. So that's what we get the clearance of that one. So the hand reflexology, the acupressure is a very old technique, and it has am I visible? Yes, sir, you are visible. No, I think I wanted to share it. So the acupressure has a different modalities. One is the acupuncture points, and the second thing is that reflex points. So reflex points means whenever there is any the hands and feet are, so when we superpose like this, we will be getting it. When we superpose feet, when we are superposing on the body, we will be there is a one to one correspondence. यानी जब फीट के अंदर जो जो भी है, ये बॉडी का अंदर जो भी है, इधर का लंग्स का है, इधर फीट होता है. annotation किधर है? So you can see here the red ball moving here. ये लंग्स का पोर्शन है बॉडी में. ये लंग्स का इधर लंग्स होता है. And when the heart part is there, in the left leg heart hota hai, then stomach is there. The stomach portion is divided between the both the left leg and right leg. And here the liver portion is on the left side, and here this side, outside of the stomach, you will find the spleen here. So that will be here, and pancreas will be behind the stomach. So that also is a portion here. You can see in the orange color extending into the two pieces, 2 feet. Then large intestine, small intestine, then reproductive organs, etc. You can see here the similarly the same thing you can see in the feet also. So these two are this is the head region, and ये the आंखों का region है, and this is ears, कानों का region है, ये lungs का है. So every part is represented here in the feet. So now when we are walking on pebbles or stones, when or a rough surface, automatically without chappal acupressure हो जाता है. अपना बॉडी में acupressure होता है और foot reflexology होता है. So the concept here is when we are in the same thing, when the body we superpose in the hands also. In the hands is ears are coming here, and this is chest, breast, lungs, and bronchial area in both the hands. And then liver is on the right side of the hand. This is right palm, so the right side. Then heart comes on the left side, adrenal gland, and these are all the adrenal intestines, etc. You can see, and the spinal reflex point is coming here in the sideways here, and this is the head region, brain, and there's a neck, and here also the thyroid, parathyroid, pancreas, bladder. All these points are coming here in the body, and stomach here. So as we go, and again in the same, in the tip of the all the fingers represent the brain and sinus areas.
head, brain, and sinus area. And these two, the first, when we put like this hands, the middle portion represents the head to our area, and the eyes represent these two fingers, dono, index finger and middle finger, eyes, and ear and other portion on the left, and the last two fingers ear hota hai. Same thing, I was sharing it in the picture here, the hand. So now in the reflexology, and the back side also you can see here. In the backside also, there is the lymph, knee and leg points, hip points, ovaries, testicles, on the tailbone area. This is when the spinal cord is coming here, tailbone area, and the top left here. So you can see here that how each the neck, head, and ear and all, and backside also, the backside of the hand, and here this side area you can see neck, all this nervous system will come here. तो सर हमें Okay, ये so क्यों समझना चाहिए, ये पॉइंट्स आप क्यों समझा रहे हैं कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दबाएं, ऐसा? coming to that. या So if any problem, when we are applying the pressure here, ऐसा दबाते हैं इधर कहीं, कहीं भी पेन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हाथों में पेन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स, अभी ये पॉइंट प्रेस करे तो दिस इज कॉल्ड द थायराइड, पैराथायराइड एरिया. So there will be pain here for most of the people because it also reflects the emotions, anger, rage. ओके, सो जो ज्यादा एंग्री में रहता है, क्रोध में रहता है, शाउट करते हैं किसी का ऊपर, ज्यादा चिल्लाते हैं, लोगों को इधर इमोशंस, इधर पेन रहता है. So when the problem is there in the body, it will reflect in the hands as well as the feet. When there is a problem in any problem in our body, suppose there is a digestion issue, there is a acidity issue, there is a gas issue, there is a heart issue, there is a stomach, the stomach or anything, any related to the digestion, respiration. When the respiration problem is, यानी श्वास लेना, exhale, इसका lung का, or what we get, the what you call asthma problem. Such problems we can go to the hands directly here and apply the pressure. This is a lung area. This is a lung area. This is the stomach area. So this is the water. So why I am showing these things is our body parts are within our hands and our body parts are within our feet. अपना बॉडी का पूरा जो अंग अंग है, हाथों का भी और लंग का, लिवर का, हार्ट का, पूरा जो भी है अपना हाथों में है, वो पॉइंट्स उसका, वो उसका पॉइंट्स का, उसका पेन इधर भी रिफ्लेक्ट होता है. थोड़े दिन के बाद, इमीडिएट नहीं होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद इसमें रिफ्लेक्ट होता है. लेकिन जब हम प्रेस करते हैं, इधर आक्यूप्रेशर करते हैं, प्रेस करते रहते हैं, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाता है. जो भी एसिडिटी प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, और लंग्स का प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आस्थमा प्रॉब्लम है, काफ कोल्ड है. से काफ कोल्ड है तो इधर ये उंगली का इस तरफ में प्रेस करने का है, दोनों तरफ से प्रेस करते रहना चाहिए. इधर ये तो ट्रिपल वार्म है, वात पित्त कफा का है. सो ऑल दीज थिंग्स विल प्रेस हियर, लाइक दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस ज्ञान फॉर व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द हाथ में, पाँव में. Am I clear? यस सर. Okay. So by knowing, actually you don't need to know. ये पूरा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है. मालूम करने के, अवेयरनेस, विथ अवेयरनेस व्हेन यू आर डूइंग, यू गेट बेटर रिजल्ट्स. अगर without awareness also you get good results when somebody else is doing for you, because that person is aware of what he is doing for you. ओके, so इसका थोड़ा हिस्ट्री में भी बताता हूँ मैंने. जब ये पूरा अंग अंग इधर का, किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का, ब्लैडर का, और पूरा अंग इधर पाँव में है, जब पाँव ऊपर से नीचे तक जब दबाते हैं, पूरा प्रॉब्लम सबको सॉल्व होता है. द कॉन्सेप्ट इज दैट.
Okay, so now I just wanted to share the video. Here, what we apply is because these things, these are the two represents the eyes, and the last various mechanisms like zone therapy, reflexology, acupoints, etc. So there are no side effects with this by practicing it. So when we superpose our hands on our body, this central portion, both the thumbs represent the central portion. Similarly, each and every organ represented here, and this is these are the two represents the eyes, and the last represent the ears and this portion. So these things, images we can see online, they are available. Here what we apply is, because similarly the feet also, when we superpose on the body, we get a lot of the similarities of body organization, body organs, everything is reflected into the feet here. And the spinal cord also represents exactly the curvature here up to here, from here to here. We superpose foot also. This area represents head zone. These two represent the other portion, like the eyes, here it comes, and this represents the ears portion. But also it represents, like in zone therapy, all the organs, body organs, whatever are there from head to here, are represented within our feet. This area is a lung area. This is a digestive system area, and this is reproductive, and then large intestine, small intestine area, etc. Similarly, the spinal cord, backside spinal cord, whatever is there, it comes with this curvature like this here, up to here it comes. So what we do here, when we are pressing any part of the body here like this is the lung area, and in the left leg, heart area comes here. In the right leg, only lung area will be here in this area. So what we do, when we apply the pressure like this, here we don't get pain in the feet when we are applying the pressure, but lot of tiresomeness will reduce immediately. And by pressing it like this from the top of the fingers and this area, centimeter by centimeter, just without much gap, if you are applying the pressure, even if you don't know which organ falls at which place, you are regenerating all your organs within your body, and energy flow and organ functioning will improve. So that is the basic concept of this particular reflexology. Similarly, like this, here also you have to press, and when there is a headache, you can apply the pressure here on the top of this one, because all this area represents head region. So this area for the eyes. So in U shape here, you can apply the pressure here. This area represents the ears in U shape here from these two fingers, and this area is throat, esophagus, etc. And then digestive system, stomach area, etc. So the picture, whatever available in the internet, from internet we can see the pictures and then download and then apply the pressure here. While people don't have to spend much time for this activity, daily in the morning, 5 to 10 minutes on each foot will help a lot. While watching TV also they can do it. When they are sitting and when they are talking with each other, they can do this one. But give a gap of at least 2 hours after heavy meal, and at least 1 hour, 1.5 hours after light meal. It's preferred to do it before meals always. Similarly, when we have the hand reflexology, we can also apply the pressure here like this. This is again the face area, eyes area, and then all endocrine systems like pituitary, thyroid, etc. will come here, and the digestive system, stomach area will come here. So even without knowing, heart area will come here. This is a lung area. By applying the pressure in this one like this with one hand, centimeter by centimeter, just give a small gap and keep moving, apply the pressure. It is a pleasurable pressure again, and normally we don't have the pain in any part of the hands or this one, or you can apply the pressure like this also, so that 5 minutes when you are working, you are activating all your organs, internal organs. Similarly on both the hands. So whatever we are doing, so when we say in the zone therapy, each finger represents like this and this comes like this. In reflexology also, when we are putting, the body represents left half, right half this side,
left half this side. So just don't do for one hand and leave it. For harmony purpose, you do it on both the hands like this. So spend some 5 minutes on both the hands at any time on an empty stomach, preferably, or maybe after 2 hours after lunch. Preferably when yin and yang energies, that is negative and positive energies, are equal around 6 to 8 in the morning and 6 to 8 in the evening, one can do these things more comfortably. So this is immense results, and then immense energy flow and activation of the organs will happen. So one best example I can tell is my son. When he was 2 years old, he was getting frequent cough, cold, fever, etc. Then we thought we were giving a lot of allopathy medicines. Then I learned this acupressure. I just experimented on the foot reflexology for about 15 days, daily 10 minutes when I was doing the full foot from the top to bottom for full foot for about 10 minutes I was doing. He used to get very good sleep, deep sleep, and within 5 minutes to 10 minutes he used to sleep. So when I apply the pressure on both the feet like that, for next 10 years, when he reached 12 years of age, he didn't have cough, cold and fever, and his all hormonal system also is very good, and he has also grown very tall. So this is the impact of foot reflexology, where people like acupressure points may not be in a position to bear the pain sometimes. Some people, the reflexology works very well, and zone therapy also works very well for those people. By applying the pressure at the root of the zone, all the 10 zones we can activate like this: 7 times for preventive, 14 times for curative. This zone therapy works miraculously by removing all the energy blockages within that zone. Like this, similarly for the foot also, we can go to the root of the nail like this and apply the pressure on each toe. So in the zone therapy, the concept is, when we are pressing, full zone gets activated and all the blockages within the energy, within that particular zone, energy blockages will be removed, and thereby the energy flow in the body will be increasing, and then healing power of the body will increase, and the person will be more active, more energetic and more harmonious. तो अभी तक सर ने जो छोटा सा वीडियो दिखाया है, उसमें ये बता रहे हैं कि जोन थेरेपी से हम उपचार भी कर सकते हैं, और अगर कोई हमारा कुछ निवार मतलब अगर हम चाहते हैं कि कोई बीमारी ना हो, तो 5-10 मिनट टीवी देखते हुए अपने जो उंगलियों के जो कोने हैं, या जो पहला भाग है, उसको अगर हम दबाते हैं तो सारे जो 20 जोन पहले बताए गए थे, वो सारे एक किस्म से उनमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। वे सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारे आंतरिक जो अंग हैं, जो अभी अभी बता रहे थे कि हार्ट है, लिवर है और गुर्दे हैं, ये सब जो है उसमें जो ऊर्जा है वो सक्रिय रूप से बहने लगती है। तो इसका मुख्य ये है कि हम अगर बीमार नहीं भी हैं तो 5-10 मिनट का इस तरह से हाथ और पैरों की उंगलियों को दबा के उन जोन को सक्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी कोई जगह पे कोई दर्द हो रहा है, जब हम ये देखते हैं हाथ में एक एक जगह पे ऐसे दबाते हुए, तब हमारी समझ में आता है कि वहां पर शायद कुछ अवरोध है, कोई ब्लॉकेज है। तो जब हम उसको दबाते हैं सात एक एक कुछ कुछ मिनटों के लिए, तो अवरोध जो है वो खुल जाता है। तो ये वीडियो में बताया गया था, उन्होंने बताया था किस तरह से दबाना है। जी सर, ओवर टू यू। Okay, thank you. So you can see here this spinal reflexology. You can see this. सर, यस, वी कैन सी। Spine reflexology you can see, no? So यस, यस। I'm not seeing. C1 to C7, that means a pura cervical region here. So then comes the T1 to T7, thoracic region, then तो सर lumbar आपको region, वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी आपको देख रहे हैं, तो आप
Oh, sorry, it's not coming. So, अभी दिख रहा है ना? Are you able to see? Yes, yes. Okay. ये देखे तो इधर पूरा स्पाइनल कार्ड का जो भी है, ये इधर एग्जैक्ट कर्वेचर एंड व्हाट यू कॉल, जो उसका शेप है, जो हमारे जो अंदर का भाग है पैरों का। या जो जो शेप है उसका शेप, और फुट का साइड का शेप भी वैसे वैसा ही होता है। कर्वेचर जो भी है, कर्व जो है, जो किधर भी बेंड होता है उधर भी बेंड पाँव में भी दिखता है। जब इधर इधर प्रेस करे तो, ये पॉइंट्स में प्रेस करे तो इधर का पेन कम होता है। यानी कैसा होता है दिखाता हूँ मैंने से एक बार क्या हुआ था, एक आदमी ने हमारा घर को आया था। उसको 3 साल से, उसको 3 महीने पहले उसको एक्सीडेंट हुआ था। जी सर, प्रसाद सर, ओके। तो बैकबोन जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड बोल रहे हैं। और जो हाँ, जो अंदर का भाग होता है, जो वक्र भाग होता है हमारे पैरों में, वहां पर हमारी जो मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी है, उसके पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं इस वक्त। और आप कोई सर या एग्जाम्पल बता रहे हैं, या उदाहरण या बता रहे हैं। इधर, या एक उदाहरण क्या हुआ था, एक एक आदमी हमारा घर को आया था, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स। उसको पूरा बेंड होके बात कर रहा था। मैंने देखा तो मैंने पूछा था क्यों बेंड हो रहा है, क्यों ऐसा झुक रहा है पूरा, ये बीच में लंग्स का बैक साइड से पूरा झुक के बात कर रहा था वो टाइम पे क्या हुआ बताया था, वो एक्सीडेंट हुआ इसीलिए इधर ये जोन में, ये T3 T4 T5 T2 T3 इधर देख रहा है ना, T2 T3 इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए मैंने स्ट्रेट नहीं खड़ा सकता कर सकता हूँ, I can't stand straight. So then what happened? I just went to the reflex point in the foot and I applied the pressure here on 2 3 points here which are related to the this thoracic area. In this one, when I applied the pressure on the foot, the moment I was applying the pressure, he was saying very severe pain was there. He was shouting, ah, but then he was becoming straight. And then he felt that I am having a full relief now and the pain has reduced immediately, instantly. एकदम से जैसा पेन छूट गया, उधर से दर्द छूट गया, और अभी मैं पूरा ब्रीथिंग बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। सो 3 साल से वो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ही गॉट द प्रॉब्लम हियर, पेन वाज देयर एंड देन ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, पूरा बेंड होके बात कर रहा था, एकदम एक स्ट्रेट बन गया, एक सीधा बन गया। यू वांट टू ट्रांसलेट मैडम? तो सर, सर ये बता रहे हैं कि जो हमारा वक्र एरिया होता है, जो जगह होती है पैरों की अंदर की तरफ, जहां पर चप्पल एक किस्म से मुड़ जाती है, उस तरफ में हमारी रीढ़ की हड्डी के पॉइंट्स होते हैं। और एक कोई व्यक्ति आया था, वो झुक के बात कर रहा था, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। तो सर ने उसके देखेंगे अंगूठे के नीचे पर जो साइड में जो जगह है, वहां पर उन्होंने दबाया, तो वो आदमी चिल्लाने लगा कि उसे काफी दर्द हो रहा है। लेकिन फिर जब वो दबाने के बाद, सर ने दबाने के बाद, उसको सांस भी आने लगी और वो बिल्कुल सीधा हो गया। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ हो तो हम भी इस तरह से कर सकते हैं। या मेनी पीपल नो द, ज्यादा से ज्यादा लोग लोअर बैक पेन बोलता है, T3 T4 लंबार पेन 1 2 3 4 बोलता है। जस्ट अप्लाई द प्रेशर फ्रॉम हियर इन द टोटल साइड ऑफ द फुट, यहाँ से दबाए तो उधर ठीक होता है। All because almost everybody, the neck pain, cervical pain also. Many people will say that we are having a C3, C4, C5 problem and a disc compression problem. ये पूरा problems बताते रहते हैं. Actually, when we went to for some reason with somebody, I went to hospital orthopedician, and then he said 90% of the people will have that C3, C4
and T3, T4, but few people will have more severe. Then those people also can apply the pressure. These kind of people will have the pain, but some people cannot sustain the pain. Okay, so now from the acupressure point of view, what they say is they have to operate. In allopathy, they say they have to operate or they have to take the painkillers. Whereas in in acupressure, what we can do, apply the pressure in this one, in this area, like this, in this zone, you will see the results, very good results you will see. When even when I'm attending many conferences also, any training programs I am attending, कोई भी बोलता है I cannot lift my shoulder, I have my frozen shoulder है, और मेरा the cervical problem है, मैं बेल्ट लगाता हूँ उधर पेन होता है, C3 C4 का प्रॉब्लम है मेरा. फॉर दोज पीपल आई जस्ट टेक हैंड, ऐसा हाथ लेके उधर उसका साइड का दबा, तो इधर का हाथ में इधर आता है. मैंने ऐसा पिक्चर में दिखाया था, हाथ में इधर आता है स्पाइनल कार्ड का रिफ्लेक्स, और पाँव में भी ऐसा वो साइड में आता है जो अभी दिखाया था अब तक. जब उधर प्रेस करते हैं हमको पेन का रिलीफ होता है. So we get very good this one. This is really tested on many people. I have attended so many trainings like a color therapy, pranic healing, or whatever you have seen on my list. Wherever I go, if they say shoulder pain, I immediately press. Within 2 minutes, they will see, they will be able to lift their hands fully and get the good results. Okay, instant 30 to 40% reduction. 2-3 times if we are applying the pressure, it will reduce fully. Okay, so the energy blockage, that's what we call the blockages. Okay, so shall I move on? Yes, sir. You can move on. Yes. So now we have seen the reflexology video we have already seen. So to sum it up, the zone therapy we have discussed, reflexology we have hand reflexology and foot reflexology, and the spinal reflex also we have seen. Then we have seen how to make it this reflex points. So before I go for the next video, I will show one more video on this one, SWASIO exercise. Before that, I just wanted to explain. अभी ये auricular therapy, this is called the auricular therapy, ear acupressure, ear acupressure होता है इसको. कान के भी पॉइंट्स को हम दबा सकते हैं, यही ना? Yes, yeah. ये पिक्चर बीच में आ रहा है मुझे इसलिए. ओके, सो इधर क्या होता है, यू कैन सी दिस पिक्चर, इन्वर्टेड एम्ब्रियो. इन्वर्टेड एम्ब्रियो बोले तो जब गोद में बच्चा पिंड शिशु होता है प्रेगनेंसी का टाइम पे जो होता है वो देखिए इधर ऐसा. ओके, कान का भी सेम पिक्चर है, देखो इधर जो भी कान का पिक्चर है, इट इज द सेम एज इन्वर्टेड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गर्भ में जो बच्चा होता है, एम्ब्रियो, शिशु, छोटा बच्चा जो पल रहा है, वो उल्टा दिखाई देता है. कान में वही पॉइंट्स दिखाई देते हैं, वही पॉइंट्स होते हैं. ये सर बोल रहे हैं. या सो इधर नहीं, इधर देखे तो क्या होता है, पूरा पॉइंट, अभी ये रेड पॉइंट्स देखिए इधर, ये जोन में हेड रीजन है. इधर इधर देखे तो ये हेड है, इधर हेड, कान, द आइस. देन ये पूरा स्पाइनल कार्ड होता है. इधर देखिए इधर कैसा, हाउ इट इज स्पाइनल कार्ड. एंड देन हियर द फुट इज कमिंग हियर, एंड देन उसका फुट इधर है, इसका हाथ का पॉइंट्स इधर आ रहा है. सो देन ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर कमिंग हियर, then heart, right lung, and all those things. Yani in when we go here, this is ear point here, and all these points how they are here. So क्या होता है जब हम when we start pressing here in the ear like this, when we apply the pressure, are able to hear me? When we are applying the pressure here like this, You can remove the
picture and then show your picture. Okay, yeah. fine. Yeah, thank you. When we can apply the pressure here while taking bath also we can apply the pressure. This is the head region. Here pituitary also will be coming, and then this is the one which controls all the hormonal balance or imbalance. For the ladies particularly, why the piercing happens here, जब वो रिंग के लिए कान को इधर छेदा प्रेस जाता है। करता है, छेदते हैं, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, you can definitely it is going to improve your brain area. Okay, so then when there is a pain here in the back pain, you can apply the pressure like this. Just apply the pressure like this. Keep applying the pressure on the ears. Okay, and दोनों तरफ you can apply the pressure. So like this, just apply the pressure here. So daily 5 minutes, you can just keep on applying and enjoying your pain here. And it is some points you cannot reach. इसमें कानों का इसमें करने से क्या होता है, वेरी गुड रिजल्ट्स वी गेट इट. जब when you go to the specialist, auricular specialist, they take such a sharp edged pin, or rather the acupressure pressure points करने के लिए they will apply the pressure with this one, like it will be very needle kind of a thing. They apply the pressure, it will be very painful. In the auricular therapy, the pain you have to go deep. इससे ऐसा शार्प वाला इससे थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा. लेकिन आक्यूप्रेशर में क्या कर सकते हैं हम, we know when all the organs are there inside, when you are applying the hand pressure, foot pressure, similarly apply the pressure in the ears also, then immediately you see the result. Heat will come in your body, so you can apply the pressure here inside. Okay, up to the inside wherever it is, so you find the results here. And particularly that head region headache is there, apply the pressure. जब आप गणपति का पंडाल में हम ऐसा बैठ के करते हैं ना, so वो भी we can do that also. Okay. Yes sir. Yes sir. Okay. So then the face reflexology. This is the face reflexology. Acupressure points in the face. Again, every point is there: bladder, large intestine, liver, and all the points are reflected in the face. Now, should we know all these things? Not required. Just daily apply the pressure. So when we know that, we are aware the face में भी पूरा representation होता है, खाली thumb में भी पूरा body का representation होता है, हाथ में पूरा बॉडी का रिप्रेजेंटेशन होता है, फीट में काली फुल रिप्रेजेंटेशन होता है. So you apply the pressure here like this. So this is sinus area. Apply the pressure here like this. Okay. Then this is eyes area. Apply the pressure here. Close your eyes when you are applying the pressure. Okay. Then ears. All the points wherever are there. When you are applying the pressure here like this, 5 minutes. Enjoy the pressure. थोड़ा पेन भी होता है, थोड़ा ये भी होता है, थोड़ा एक्टिवेशन भी होता है. यू विल बी एंजॉयिंग इट दैट. सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड. ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं इससे भी. हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी. सो जूम करने के लिए बोल रहा था, क्या जूम करने पे? वो जो पिक्चर आप दिखा रहे थे ना सर, जो कान की जो दिखा रहे थे, जिसमें कि वो गर्भ में जो हाँ बच्चा था, वो हाँ तो हाँ, दिखा वो रहे थे. दिखा रहे. हाँ ओके. हाँ इज इट विजिबल नाउ? हाँ हाँ हाँ, विजिबल है सर. ओके, फुल. यू कैन जस्ट चेक इट. से मुझे ना ये पिक्चर अभी अपना ये वाला होता है ना, जो participants का list, it is not seen, it is obstructing my view of
making it. So कोई बात जितना भी यूज करते हैं जूम, लेकिन ज्यादा वी हैव नॉट acquainted with its features of Zoom. Okay, so now the idea is here, when preliminary आप डिटेक्शन भी कर सकते हैं, यानी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं अपने आप. when we are a normal person, apply the pressure here, and automatically each organ gets activated and their functioning will improve. So जब ऑटोमेटिकली उसका जो भी काम करने का है, ईच हार्ट का, लंग का, और स्प्लीन का, पैंक्रियास का, लिवर का, everything will start working continuously, and function will improve when we apply the pressure here, all these things. So the as I told you, the zone therapy, now we'll come to the zone therapy mein. So one example I want to share. uh, After this next one, I'll SWASIO exercise, then important points. Okay, so stop sharing. One example I just wanted to share is that in the zone therapy, one 17 years old boy who is he cannot speak properly, and then he is having from the childhood milestone growth problems, and then he is having the physical problems also, for foot as well as hand and legs, everything. There were many problems were there. So when we ask him to bring like this hands or close your hand, so he cannot bring it like this. With other hand, he has to bring the fingers, या ऐसा पकड़ के ऐसा लाने के होता है. वो बच्चा को क्या होगा, वो पूरा प्रॉब्लम्स है बॉडी में. सो हाथ अपने आप नजीक ले आने के लिए नहीं होता उसको. उसे क्या किया था मैंने, सो आक्यूप्रेशर जोन थेरेपी किया था, पूरा फिंगर्स में जोन थेरेपी किया था. विथ दिस जोन थेरेपी, after few days, it took a long time. It's not one session or two sessions, maybe some 15-20 sessions हुआ था. 15-20 दिन के बाद, 15-20 सेशंस के बाद, now he is able to bring everything, and then hold, and then push, and then strengthen. All the strength of his hand has improved, and he is doing all his work on his own. Okay, so that is the power of zone therapy and acupressure. And then, as I mentioned about my own son, applying the pressure here. And one more example I want to give. मेरा हमारा चाचा, the 70 years old, he is able to, उसको मैंने दोनों मिलके हैदराबाद में जू से हमारा घर तक अब कम से कम 12 किलोमीटर दूर लंबा ही रहता है. हमारा आंटी का हस्बैंड, प्रथमा मैया कॉल मामा, उसको क्या होता है, वो तो स्पिरिचुअल ऑरेटर है. वो स्पिरिचुअल ऑरेटर मीन द बाबा का राइटिंग्स आता है उसका, वो स्पीच उसको जो देता है, ही कैन स्पीक आवर्स टुगेदर. 10 घंटे 12 घंटे बिना पानी पिए बात करते रहते हैं. उतना ज्यादा बात करता है, इतना लंबा वॉक करता है. उसको जब मैंने आंख प्रेशर मैंने सीखने के बाद 90s में, उसको उसका उम्र कम से कम 70 to 73 years होता है. अभी 10 कदम चलने से उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रहा था, और एसिडिटी, बर्निंग, हार्ट बर्निंग सेंसेशन आ रहा था. बात भी नहीं कर सकते थे. तो मैंने बोला, मामा मैंने आंख प्रेशर ऐसा नया सीख लिया, आपका हमारा घर को आ जाओ, हम कुछ करेंगे. जब वो हमारा घर 3rd फ्लोर में था, वो हमारा घर को आया था. एक एक 5-6 स्टेप्स को एक बार रुक के थोड़ा बटर मिल्क पीना है, क्योंकि बर्निंग हो रहा है, और थोड़ा पानी पीना है, वो और कुछ करना है, थोड़ा रेस्ट करना है. ऊपर 3 फ्लोर आने के लिए वो 15 मिनट to 20 मिनट लिया था ऊपर आने के लिए. हमको, हमारे पेरेंट्स को डर होता रहा, क्या हो गया है, क्या हुआ, ऐसा पर्सन ऊपर आ रहा है, क्या करेंगे, उसको कुछ हो गए तो हॉस्पिटल ले जाना भी मुश्किल है. तो मैंने आने के बाद उसको आक्यूप्रेशर शुरू किया था. पहले दिन आक्यूप्रेशर करने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत. मैं घर में भी ज्यादा दूर जा सकता हूँ. अभी पैदल चल रहा था. दूसरा दिन आक्यूप्रेशर करने के बाद उसको ये पूरा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एंड आक्यूप्रेशर पॉइंट, दूसरा दिन करने के बाद वो ऊपर का, घर का ऊपर गया था, चाहे 4th फ्लोर ऊपर गया था. उधर जाके उधर वॉकिंग करके आया था.
मैं भी साथ था उसको, उसके साथ। तीसरा दिन आंख प्रेशर करने के बाद ऊपर जाके उधर 1 किलोमीटर तक वॉकिंग किया था। 1 किलोमीटर। जब उसको ये आंख प्रेशर का समझ में आया क्या है उसका पावर, वो बुक्स मंगा के, कम से कम 15 बुक्स मंगा के वो भी पढ़ा था, वो भी आंख प्रेशर सीखा था। वो उधर 5वां दिन क्या वो पढ़ना लगा, अंडरस्टैंड हो गया। 6 दिन के बाद पूरा 3 फ्लोर नीचे उतर के 1 किलोमीटर हमारा दूसरा अंकल का घर को जाके वहां से पूरा 3 फ्लोर्स दर 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 एकदम बिना रुके ऊपर गया, हमारा घर को आया था। यानी दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, एनीबडी कैन डू द acupressure, foot reflexology, and there are no side effects. And such a person with a heart enlargement, not able to walk 10 steps and not able to speak, he learned acupressure and he is able to walk freely, and he started teaching to the acupressure in their village for several people. He carried the 10 books of acupressure with him by Dhiren Gala, Vora, Health in Your Hands, Pura. This is one best example which I cannot forget. Okay, so you want any translation, any या clarification on तो this? श्रीनिवास सर के जो मामा जी थे वो 70 साल के थे जब 1980 या 90 में जब सर ने पहली बार सीखा था। और वो उनके घर में तीसरे फ्लोर पर आ भी नहीं पा रहे थे, चढ़ के आ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि एसिडिटी काफी थी। तो अब सर जब मामा जी ऊपर आ गए तो उन्होंने उनको सेशन दिए और एक ही सेशन में वो काफी दूर तक चलने लगे। और 2-3 दिनों बाद फिर वो दूसरे घर में भी और अपने घर में भी दूर तक चलने लगे। तो ये सर बोल रहे हैं कि कोई भी इसको प्रयोग में ला सकता है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और ऊर्जा बढ़ती है। और जो भी गतिरोध या अवरोध हमारे शरीर में किसी अंग में आया है वो खुल जाता है। Yes, thank you. So, any questions so far here? There are new people also. If please आप अनम्यूट करें, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और प्रश्न you can Yes, ask yeah. question. Surampudi. I've been practicing acupressure since '93, and also we'll be raising our feet. इससे क्या होता है? ये बोधिधर्मा इंडियन, ये बोधिधर्मा चेन्नई से गया था बोधिधर्मा, and he went to China, and there he has taught this particular technique, SWASIO technique, and even acupressure, etc. came from China that time. Okay, so there he has designed this SWASIO exercise. Literally, SWASIO means a swing or throw away. So you just swing. Swing means you are taking the energy from one direction, like this, wherever we are sitting, standing, and throwing back all the negative emotions. So by swinging arms back and forth, the feeling of throwing away negative emotions, attitudes like fear, jealousy, greed, anger, and undesired habits, one can gain positive energy. And SWASIO exercise means a prevention of diseases as well as a cure. It is also means sustaining and developing the health. It is easy, can be done by everyone, young or old, having remarkable effects on hundreds of diseases. Okay, do it in southwest, northeast direction, minimum 200 to 1000 we can do it. Okay, so इसमें क्या होता है, the SWASIO exercise, I'll just play the video, then I will tell some 2-3 case studies about that. I learned when I was in ISRO, and I learned from also the full body exercise it will cover. So as we know that there are when we are doing this SWASIO exercise, foot reflexology also is covered, zone therapy also is covered in this. Full body is represented within the feet, and the zone begins from the beginning for each of the foot. From the each finger represents each zone. So when we are talking of the SWASIO exercise, we are activating all the 10 zones of the
body here, and also we are activating all the parts of the foot which are body parts are available within the foot as per the foot reflexology. It is very simple. Anybody can start doing these exercises, SWASIO exercises. So just simply, there are two variants. Raise the hands like this, and without raising the foot, or just like this, you can raise like this while swinging your arms. SWASIO is swinging in and out like this. Take up to your above the head level, and then push the energy back like this. In a rhythmic way, you can do the swinging of your arms like this. So one variant is you are lifting both the feet here like this, which is more impactful on your lung area. All breathing problems will vanish or reduce with this exercise. There are many more other benefits which we will talk of later as we go. And the second variant is just to slightly bring down or fold your fingers like this, if you can, and then press this one. This is the one very powerful. Full zones, all the 10 zones get activated apart from the lung activation and other parts, etc. When we are doing like this 50 times in each direction, we have to do like east, west, north, south. Start with south like this, do 50 times like this, and west side, north side like this. So the idea here is we are taking positive energy and throwing out the negative energy when we are throwing our hands back. So attract the positive energy of the direction and throw out the negative energies from our body. With this, we are activating all our organs directly through the foot. Directly we are activating each and every zone by pressing the fingers close to the earth like this, and we are in a position to clear all the zone related blockages within the body. So this is very impactful exercise. One of my friends said he used it up to the 1000 count. That means up to 250 in each direction he was doing. Morning 500, evening 500, sometimes 1000 in one day in the morning itself. He reduced his BP and diabetes tablets. Almost he has removed it, but he was checking it, monitoring continuously while doing this one. And then finally he gave very good feedback with 1000 times SWASIO exercise, doing it regularly. He could remove his diabetes and BP problems. Any questions on that one? So जो क्या हुआ, इसको एक बच्चा को हम बोले थे SWASIO एक्सरसाइज करने के लिए, because he is suffering regularly from the cough and cold. उसको वो क्या किया, हम 400 करने के लिए बोला था, लेकिन वो 2 दिन करने के बाद 400 बहुत अच्छा लगा उसको, बच्चा को. Then he increased it automatically up to 1000. 1000 करने लगे ये ऐसा करना. उससे एक हफ्ते के बाद आके सब महीने हम 1000 किया था डेली. हमारा अभी लंग का प्रॉब्लम नहीं है, काफ कोल्ड कुछ नहीं है, सर्दी कुछ नहीं है. तो 1 साल तक उसका काफ कोल्ड कुछ नहीं आया था, उसका सस्टेनेबिलिटी उसको इंक्रीज हुआ था. तो जब हमारा फ्रेंड को बताया था, वो 20 साल से टैबलेट, मैंने केस स्टडी उसमें बताया था, 20 साल से वो बीपी और डायबिटीज का टैबलेट्स ले रहा था. जब ये हमने बताया ये स्वाइसो बोल के है, ऐसा उसको करो, उससे जोन थेरेपी भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सोलॉजी भी हो जाएगा, आर्कप्रेशर भी हो जाएगा. तो वो क्या वो करने लगे. एक 400 से शुरू करके 1000 बनाया था daily. So daily checking BP and sugar diabetes levels. एक 2 महीने में उसका कम हो गया, नॉर्मल हो गया, और मेडिसिन पूरा शुरू स्टॉप कर दिया.
उसको कम से कम 25 रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को बताया था ये कैसा करना है, क्यों करना है, क्या क्या फायदा है इससे. So he started explaining about this one. It's nothing is ours. Yeah, the more you spread, the more you get the good thing and then thing. So we are spreading here the easy health. अपने हाथ में है, अपने पाँव में है. अपना हेल्थ अपना पाँव में है, अपना हाथ में है, अपना मन में है, अपना दिमाग में है. So these very good examples of thing, and more examples we can discuss probably in some other time. So I just wanted to come to the next topic. How much time we can spend now? More? Sir, I will let you take whatever time it has, but if you give 2 minutes, if कि यहाँ पर कोई question फिर बाद में आप अपना कर सकते हैं. Yeah, we can take the questions, no problem. So इसके बाद important acupressure points होता है, वो 15 मिनट तो लगेगा. So all these points I wanted to cover. This is a very health emergency में भी use कर सकते हैं points. As we can, if you want break for 2-3 minutes, we can take the break and then come back. Then spend half an hour. I am fine for that. So क्या बोलते हैं? Yes sir, थोड़ा सा या जस्ट अ मोमेंट सर, आप सजेस्ट कर सकते हैं, पर जैसे कि अब हम 1.5 घंटे 1.25 घंटे से बात कर रहे हैं, तो कोई प्रश्न हो मन में तो वो भी पूछ Yes. पहले. हाँ, कोई मन में Yeah. कुछ, जैसे रंजीता मैम या मैं देख रही थी कोई कुछ पूछना चाहते हैं. जी मैम, अपने आप को अनम्यूट करें मैम. अनम्यूट करें मैम अपने आप को. हाँ, वैशाली मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? के लिए थोड़ा ठीक नहीं हुआ मैम, तो दोबारा से पूछे क्या, किस चीज के लिए? जैसे नी में पेन हो जाता है. सर, आर्थराइटिस के लिए नी में पेन हो जाता है, वैशाली मैम पूछ रहे हैं. No, समझा नहीं कुछ से, मुझे उसका वॉइस सुना नहीं दे रहा हमको. आर्थराइटिस. ओके, एक सेकंड. आर्थराइटिस. अभी सुनाई दे रहा है क्लियर? यस यस. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है. आर्थराइटिस फॉर द नी पेन. प्रेशर पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड्स में है. लेकिन द नेक्स्ट अभी बताने वाला था मैंने, नी प्रॉब्लम में आप क्या करना है. आर्थराइटिस अपने आप नहीं आता है, उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन्स का भी होता है. ज्यादा से ज्यादा लोग किडनी का प्रॉब्लम भी होता है, और किडनी से भी आर्थराइटिस प्रॉब्लम होता है. हार्ट का भी प्रॉब्लम आ सकता है. जब आप ये पूरा हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी जब करते रहते हैं, आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूव्स. यानी पूरा तबीयत जब इंक्रीज होता है, ऑल ऑर्गन फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है. ये अपने आप ये भी कम होता है. लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्थराइटिस का, नी पेन का पॉइंट्स दिखाएंगे. ठीक है सर, ठीक है सर. ओके. Prasad, you wanted to suggest something, or maybe Annapurna ji, we can take it. Prasad, you can just on standby. Sir, for fever, what we can do? Fever. Yeah, again, my the Mola mantra is reflexology. You apply fever. What happens? The fever is for what actually? The reason is what? Can we know the reason? Do you know? Are you aware of it? Why the fever comes? Don't know, sir. It is coming to me again and again. 15 days Okay. now. So basically, the fever comes because it is an internal system fighting, and then the defense mechanism. Fever is a defense mechanism to fight the infection in the body. Okay. So when we are having some infection in the body, it fights. Because of that, the fever will come. In a way, once in a way, we should get the fever. That is a good sign that our body is working.
And fever के लिए the triple warmer बोल के है, it is coming in the next thing. But again, as I am telling you, the infection कहाँ है, lungs में है या ब्लड में है या स्किन में है, क्या है वो, उससे आप आक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जब करते हैं पूरा यू आर एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सो द फीवर भी कम होता है. ठीक. So fever is not just like a fever; it is comes from various reasons are there for that. When we are getting cough cold, also we get the fever. So fever is fighting mechanism because that indicates the fighting mechanism. But it is very high fever like 105, 104 like that. It comes. You can definitely visit the doctor and take the suggestions. What is the root cause? But as a first aid, you can start for any problem, whatever we face. You can start the reflexology. Foot reflexology is, and the SWASIO exercise is the best solution for many problems. Next. जी sir. Prasad, are you there? Prasad sir, you wanted to say something? Hello, are you able to hear me? Yeah. Yes. Yeah, we are able to hear you. Once I'm using this mic, it is not. It is going away. Anyway, one thing I want to remind regarding the high fever. Once you told me to press the index and middle finger and the thumb together, that will give a very good result of reducing the temperature. Within few minutes, it will have the impact. And that this technique, I did it for my children when we were traveling. We didn't have any tablets, but this has worked very nicely. So even whenever somebody is having high temperature, I try that and immediately it comes to normalcy. That is one thing. Dear brother, please come on with the mic and with the picture and show it. नहीं sir, Prasad is no, Thank let him show where. Let him show what he's explaining. So we'll see that. Please come on, Prasad. Video. Hello. If I'm using this mic, that it is going out of the Zoom. So I'm just recalling what you have given me the suggestion long time back, about 20-25 years back, when there is any high temperature. Even Bora's book I have read. If there is high temperature, to control the high temperature, to bring it to normalcy, the technique which was disclosed is press the index and middle finger and both means together. Put it together. Put the right. Well, like that this? One and thumb. Yeah, that's it. That's it. If you are these doing to no, not that way. Index and middle together and thumb separately. All the three you hold together. At the same time, like this you have to hold. You mean to say? You are holding for another person, so you can always hold thumb all the three together with the two hands. Index and middle finger with one hand. So this this technique has reduced the temperature immediately. Within few minutes, the temperature has come down. So this technique is working. Whenever there is emergency to reduce the temperature, this is working. There is one thing I want to recall and tell you. Then other one regarding SWASIO, if somebody, because I don't know the age group which people who are going to start. So all the people, as per their body limitations, if they start with say 20 or 10, whatever is permissible, because within 1 or 2 days, what will happen? Just near the shoulder, there will be a slight hardness or the pain. So with that, they should not get disappointed. So कंधों पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो जो सह पाते हैं उतना ही करना है. मीन्स शुरुआत से ही अगर 200-300 करें तो मुश्किल हो सकता है. So they should start with small numbers and then gradually increase. That will be nice. That's what the suggestion I wanted to tell. Thank you. थैंक यू सर. मैं बस हिंदी में थोड़ा सा बोल देती हूँ कि अभी जो श्रीनिवास सर ने बताया, जो स्वाइसो के बारे में बताया था, जो हाथ से ऐसे ऐसे जो एनर्जी भेज रहे थे,
और चारों दिशाओं में करने के लिए कह रहे थे। तो प्रसाद सर ने उसकी बस एक और तकनीक बताई है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 एक दिशा में 100 से वो उस बात को करें। अगर हमारी शक्ति इतनी ही है कि हम 20-20 एक दिशा में कर रहे हैं तो हम वहीं से शुरू करें, और कुछ दिनों के बाद या कुछ देर करने के बाद शायद हमारे कंधों पे कुछ दर्द हो सकता है, लेकिन हमें उससे हताश नहीं होना है। हम उस करते जाएंगे तो वो जो अभी जो सारी उदाहरण दिए हैं कि उनके स्वास्थ्य में कितना लाभ हुआ, वो लाभ हमें भी मिल सकता है। Yeah. और प्रसाद सर ने In, एक बात और कही कि जो अभी अन्नपूर्णा मैम जो बुखार के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे पहली उंगली और दूसरी उंगली जो बड़ी उंगली है उसको ऐसे दबाएं तो थोड़ा बहुत जो बुखार में राहत मिल सकती है। एक और एडिशन मैम, दबाने की नहीं, पकड़ के रखना है, दबा के पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना पकड़ के रखना जस्ट होल्ड, apply the pressure like तर्जनी this, और मध्यमा को like this. एक साथ पकड़ के रखना है, और साथ साथ अंगूठा को भी पकड़ के रखना है। 2-4 मिनट पकड़ के रखने से बुखार धीरे धीरे उतर जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से करने से, ऐसा 3-4 बार करने से बुखार नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर, और थैंक यू। thank you Prasad bhai, he is my elder cousin, this one. So I Yes, sir. actually treated their mother also for the back pain. She remembers from 25 साल से जब भी मैं जाता हूँ उसका घर, तो बैक पेन का बारे में आपने बताया था ना, स्पाइनल का रिफ्लेक्स में, फुट का रिफ्लेक्स में, वो खाली वो प्रेस किया था मैंने उसको। जब भी मैं जाता हूँ अभी तक वो रिमेम्बर करती है और बोलती है जब वो किया था, जब से अब तक अभी बैक पेन नहीं आया मुझे। सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। सो and one more sharing, just I wanted to clarify on the SWASIO exercise. Shall I? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. I'll just go to the video. So